नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर पर। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में एमएसएमईज मौजूद हैं। देश के दो प्रमुख टेक्सटाइल सेंटर्स तिरुपुर और लुधियाना का हम जायजा लेंगे और मौजूदा ट्रेंड्स के साथ नए अवसरों पर मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा एम शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजीत लाकड़ा, प्रेसिडेंट लुधियाना निटर्स एसोसिएशन। आप दोनों का ही शुक्रिया। मिस्टर शनमुगम, वी वुड लाइक टू बिगिन विद यू सर। देयर इज अ डिमांड स्लो डाउन and high inflation in key export markets US and Europe. What is your assessment of the present scenario? This is an unfortunate and unprecedented situation what is prevailing right now, because this is a seasonal period where more orders need to come. Mainly it's all happening because of the ego clash what happened in Ukraine, between Ukraine and Russia, which has engulfed the entire Europe for good, as well as it has set an uncertainty across the economies of the globe. लाकड़ा साहब, आप हमें बता सके ऑर्डर्स पर कैसा इम्पैक्ट देखा जा रहा है फिलहाल? रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इसका एक बहुत बुरा असर सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो इन्फ्लेशन है ये इतनी ज्यादा हाई है, अनप्रेसिडेंटेड, जो लास्ट 40-50 साल में भी नहीं हुई है यूएसए में, यूरोप में। और इससे क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो प्रायोरिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। प्रायोरिटी इज नॉट द गारमेंट, नॉट द फैशन, इट इज ओनली पीपल विल बाय, जो नेसेसिटी होगी वही खरीदेंगे, वो बाकी चीजें नहीं लेंगे। उससे क्या हो गया, डिमांड स्लो डाउन। डिमांड जब स्लो डाउन हो तो नेचुरली प्रोडक्शन भी डाउन होगी। तो इंडिया में जो जितने भी चाहे स्पिनिंग मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल तो आई वुड से कि इस वक्त जो है 60 to 70% कम प्रोडक्शन पे चल रही हैं, जो एक लॉस मेकिंग सिचुएशन हो जाती है। हमारे कंट्री में जो रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन इज एट ए हायर प्राइस देन द इंटरनेशनल प्राइस। इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस कम हैं, हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं। अब उसकी पैरिटी के लिए करना क्या चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को जो इंपोर्ट ड्यूटी रॉ कॉटन पे लगी है उसको इस वक्त हटा देना चाहिए, ताकि जो मिलों का लॉस हो रहा है या मिलों को ऑर्डर नहीं मिल रहे, उसकी पैरिटी के लिए कॉटन प्राइसेस को डाउन करना बहुत जरूरी है। जहां तक कॉटन कीमतों की बात है, इस पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? क्या पहले के मुकाबले इसमें कुछ राहत है? इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, विदाउट एनी वैलिड रीजन, क्योंकि कभी डिमांड नजर आती है, कभी डिमांड नहीं आती है। तो प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी ना होना एक और बिजनेस के लिए बहुत बड़ी खराबी है, क्योंकि पता हो कि हम अगले 2 महीने 3 महीने ये प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, तो पीपल कैन प्लान। उसका पता लगता है कि आपने एक ऑर्डर पकड़ा है, अभी आपने यान का ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो पीछे प्राइस बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम है। जब घट जाती है तो फिर बायर कहता है जी आपके यान प्राइसेस कम है जी, मेरे को डिस्काउंट दीजिए। तो सिचुएशन ऑफ अनस्टेबिलिटी जो है ना, ये बहुत खराब है। Shanmugam ji, what is your take on the cotton prices? And as rupee has also depreciated, are the global players negotiating? Cotton price instability is the main reason for the slowdown, which is adding to the slowdown what is being witnessed right now. And as you asked for about the rupee depreciation, it is a normal phenomenon where it gets corrected immediately, because the rupee depreciation would give an opportunity, very minimum, a momentary opportunity for the exporters in any which way, because the next booking itself, the correction do happen on the pricing level. Now there is no need of yarn to be procured, because there is no order flowing is happening. So obviously, whatever the price goes down, also we are not in a position to inquire for yarn or buy yarn for any which manner. So that is the right now position where the spinning mills are in a bleeding condition.
Your views on the PLI in the textile sector, what it means for the MSMEs. The government is also considering the second phase of the PLI scheme for the textile sector. What are your expectations? PLI is a very welcomable step taken by the government, but initially they have visualized and limited to the large players to come into it. But second PLI scheme, which has been envisaged by the government and which has been expected by the MSMEs, we have requested that it should be an all accommodative one. So what we have requested is that it should be very minimum level should be around 25 crore investments, and it should have cotton based products also need to be included. So all these things we have requested the government already, and we hope that the government would consider all those factors and would announce the second PLI very soon. लाकरा जी, एफटीएस के तहत कई रीजन्स पर फोकस है. फिलहाल आप हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कैसी संभावनाएं हैं, इस पर आप अपने पक्ष रख सकें. देखिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इट इज दी वेरी वेरी राइट टाइम, बहुत ही अच्छा टाइम है. लेकिन इसमें कुछ इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए जो बांग्लादेश के साथ हमारी 10 साल पहले हुई थी. वो एक वन साइडेड काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कि हम वहां से सिंथेटिक गारमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां से हम उनको कुछ दे नहीं पा रहे. सिर्फ एक यान जाता था, कॉटन यान, तो अदरवाइज कोई और चीज़ों की एक्सपोर्ट हमारी नहीं थी और गारमेंट इंडस्ट्री हमारी सफ़र कर रही थी. ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत छोटी मार्केट है. वहाँ की कंजम्पशन जो है स्पेशली गारमेंट्स की, वो बहुत बड़ी नहीं है. लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर होगा कि जितना भी वो इंपोर्ट करते हैं वो ड्यूटी फ्री उनके कंट्री में जाएगा, तो उसका फ़ायदा इंडिया को होने वाला है. तो हमें लाइकवाइज इस वक्त बातचीत चल रही है कनाडा के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ. ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है डेफिनेटली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करेंगे. Mr. Shanmugam, your views on the FTAs and the newer opportunities. It's a very right step to be taken to fetch the FTAs with all the promising markets, because then only we will have a level playing field to compete each other efficiently and effectively. So this is our long pending plea with the government to immediately get into FTA signed with the European Union, UK, right now UK, and even the USA if possible. And particularly we have to look into this fact also, because this industry on the whole across the globe, it runs with a wafer thin margin always. So 10% or 8% or 5% even for that matter would create a much difference between the competitors. So I wish that the speedy conclusion of FTAs with all the targeted promising markets is the need of the hour, and I wish that government should achieve it as quick as possible. India has been facing stiff competition from Bangladesh and Vietnam in textile and garment trade. How is the road ahead looking like? Bangladesh and Vietnam, they are a very strong competitor to us. Not only strong, they are becoming giant competitors to us in terms of volume and in terms of trade value. The natural blessed sources available with India is good enough to equate ourselves with China. But unfortunately, because of our lack of understanding or lack of concerted effort, this has been lost by ourselves, and tiny nations like Vietnam and Bangladesh have took it as an advantage for themselves, and they started growing this industry in their territories in a very, 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 very systematic and strong manner. My wish is that instead of having export promotion boards for this textile industry, I wish that a board-like structure need to be established in the happening center.
For example, Tirupur means knitwear board to be housed in Tirupur. Karur means home textile board need to be housed in Tirupur. So with that official, with the minimum official deployment, automatically it creates a very good, strong network across the nation and help the policymakers to frame the policies suitable to promote the industry. लाकड़ा साहब, एमएसएमईज कैसे क्वालिटी टेक्नोलॉजी पर जोर दें और किस तरह वैल्यू चेन में आगे बढ़ें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका बेस स्टार्ट होता है डाइंग से। डाइंग जो है इट इज ए पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, तो पोल्यूशन का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना सारी गवर्नमेंट पे, लोगों पे, कि ये है कि भी ये बॉडी पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। बट आज के युग में पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत आसान है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इंस्टॉलेशन ऑफ सीईटीपी जो सेंट्रलाइज जो हो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जैसे लुधियाना में लगा है, 2 जगह पे लगा है, उसका बहुत फायदा हुआ है। चाहे वो वोवन इंडस्ट्री है, चाहे वो निटेड इंडस्ट्री है, सीईटीपी नए डिजाइन होने चाहिए विद द सब्सिडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर डाइंग इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, विदाउट पोल्यूशन कंट्रोल क्रिएशन है, तो नेचुरली आपके पास गारमेंट का रॉ मटेरियल तैयार होता है। और ये जो टेक्सटाइल पार्क जो हैं विद कॉमन फैसिलिटीज ये बनने चाहिए। टेक्सटाइल पार्क होगा, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई प्रिंटिंग कर रहा है, कोई डाइंग कर रहा है विद ऑल दीज सीटीपी फैसिलिटी, तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन में कॉस्ट रिडक्शन होगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं 2 प्रमुख टेक्सटाइल सेंटर्स तिरुपुर और लुधियाना पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Shanmugam ji, India's textile sector is eyeing $100 billion exports in next 5 to 6 years. What are your views? This industry, as I told, it's a promising industry, and what India is visualized to touch 100 billion in another 5 to 6 years' time is rightly targeted one only. It's not impossible. It is possible. We have to be very strong in providing facilities and infrastructure required to this industry, because this industry is a labor-intensive industry. A lot of labor supportive infrastructure development need to be taken forward. We are number one cotton growing country. We are blessed with that factor. And second thing, we are number 2 in man-made fibers manufacturing country, and number 1 in having a young workforce on hand, because India is considered to be the youth nation, because more than 65% of our population falls under 35 years of age group. What about the opportunities in the domestic market in an uncertain global environment? The domestic market is set to grow, and it is growing only, no doubt at all. And we have, since we are in an advantageous position to capitalize the domestic market's growth, definitely. But still, there need to be some handholding, because this industry has been infested by micro and small players more in number. On their own, they cannot promote their own brands and get into the market and get positioned themselves. It will take time, because the branding oneself is not so easy, at least in India-like countries. But anyhow, the market size is growing now. E-commerce platforms are thriving and helping the micro and small units also. That is going to be a very good opportunity for Indian companies to make use of it. लाकड़ा साहब, आप ग्रीन टेक्सटाइल्स पर क्या कहना चाहेंगे?
एमएसएमईज कैसे सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की राह पर आगे बढ़ सकते हैं और इसमें कैसे सपोर्ट की जरूरत है। आज जो टाइम आ गया है वो टेक्सटाइल पार्क with common facilities supported by good policies and government subsidies, ये इमीडिएट करने की जरूरत है और उससे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस भी बनेंगी, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। दैट इज द ओनली वे टू गो फर्दर। हमने इसको देखा है कि जहां जहां भी छोटे छोटे टेक्सटाइल पार्क भी बने हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं, उन्होंने कंप्लीट नहीं बनाए, तो उनसे फायदा हुआ है लेकिन उसका फायदा ज्यादा हो सकता है अगर उसको और प्लान्ड वे से, राइट फ्रॉम डाइंग इंडस्ट्री, डाइंग जिसमें फैब्रिक डाइंग भी हो, यार्न डाइंग भी हो, गारमेंट डाइंग भी हो, तो वो पोल्यूशन भी उससे रिमूव हो जाएगी, बेसिक रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उसके साथ साथ कटिंग, प्रिंटिंग, डाइंग और एम्ब्रॉयडरीज और वट एवर एल्स इज रिक्वायर्ड इन द गारमेंट इंडस्ट्री वो एक ही जगह पे अवेलेबल होंगी। एग्जीबिशन सेंटर होने चाहिए, मीटिंग रूम्स होने चाहिए, फॉरेन के बाहर आ सकते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी हम केटर कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट हमारी बड़ी स्ट्रांग है एंड इट इज ग्रोइंग ऑल्सो। तो इसलिए सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो textile park with the common facilities is a must. And Mr. Shanmugam, finally, how has Tirupur evolved and transformed into a sustainable cluster? How have the industries focused on zero liquid discharge? What have been the major learnings? It has been formulated on its own strength, like Swayambhu-like structure got established, and still it is helping the upcomers upstarters to get positioned themselves and grow from this cluster. And here the one running theory is yesterday's labor is today's owner in entirety. The cluster is made out of this concept only. So out of our own experience and our own learnings only, we have got corrected ourselves in many places. And likewise in the environmental front also, we faced a very big challenge of polluting the riverlets nearby. We incorporated the zero liquid discharge practices to be adapted, and the wherein we are number one and only for the first in the world, the first cluster in the world to take into this action. So we have we are proudly saying that we are the number one cluster which has got adapted to zero liquid practice, and now we have made it for good. So that is being witnessed all across many clusters across the globe also visits us and learn from us and started practicing over their territories. So that is the one thing. And second thing is by way of adapting this zero liquid discharge, we have got into the sustainable factors well in place. That is, and water conservation. Every day, Tirupur, because of this zero liquid discharge practice, we conserve nearly 100 mld water every day. That is nearly 10 crore liter of water is being recycled by the industrial processing houses. So that is the biggest advantage of conservation of water front. And second thing is that what the Tirupur cluster, entire Tirupur cluster's electric connectivity load is around 250 megawatts. So what we through our establishment of green energy sources like wind generators and solar panel establishment, we have invested not less than 2000 megawatt green energy sources. What we consume for the entire cluster connected load is 250 megawatt only. But what we have got established ourselves knowingly is around 2000 megawatt plus green energy and got it connected to the state grid. तो इसी नोट पर हम आज के इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए तिरुपुर से राजा एन शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड,
और लुधियाना से अजीत लाकड़ा, प्रेसिडेंट लुधियाना निटर्स एसोसिएशन, आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में हम हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।